Welcome back students. In this tutorial I am going to teach you logical operator. So what are the logical operator here? In Python we can use and or not logical operator. So these are the three logical operator. So logical operator are used to join more than one logical test together to make more complex test. So using logical operator we can give more than one condition. So how to give we will discuss. So logical operator are also called Boolean operator. So what is meant by Boolean operator? So using this Boolean operator we can get the result as a true or false. Means if the condition is true it will return true, if the condition is false it will return false. So here the following logical operator are used in Python. So what are the logical operator? First, AND. So what is use of AND logical operator? So output is true only if both value are true. Means here if the both condition is true it will result true, otherwise false. So see here, see this is the AND operator example. So see here, a greater than 10. If the value present inside the a is greater than 10, this is one condition. And is the logical operator. B is greater than 10, the result is true. Means यहाँ पे क्या होगा ए एक वेरिएबल है और ये बी अल्सो एक वेरिएबल. सो इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे एज्यूम यहाँ पे यूजर ने कुछ वैल्यू एंटर की है, ए में कुछ 12 एंटर की है वैल्यू, बी में 20 एंटर की है वैल्यू. तो यहाँ पे कंडीशन कैसे चेक होगी? ए ग्रेटर देन 10 कंडीशन ट्रू है क्या? ए में कितनी वैल्यू है? 12. So condition is true. Then what is another condition? B is greater than 10. So how much value present inside the B? 20. Means both condition are true, then result will display as a true because this is Boolean operator. See here, A is greater than 12 or B is greater than 12. So see here, both condition is false. बिकॉज यहाँ पे क्या है, ए में 12 से ज़्यादा वैल्यू है क्या? नहीं है. ए में कितनी वैल्यू है? सो यहाँ पे ए में 12 वैल्यू और बी में क्या है? बी इज ग्रेटर देन 12. सो दिस कंडीशन इज ट्रू. मीन्स यहाँ पे एक कंडीशन पॉजिटिव है, एक कंडीशन है जो निगेटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स आएगा. देन अनदर ऑपरेटर इज इक्वल्स टू ऑपरेटर. सो यहाँ पे इक्वल्स टू में हमने एक कंडीशन दी है इक्वल्स टू, और इसमें हमने और लॉजिकल ऑपरेटर यूज किया है. सो और मीन्स ये कंडीशन ट्रू होगी या बी वाली कंडीशन ट्रू होगी. तो यहाँ पे a इक्वल्स टू 12. सो कंडीशन ट्रू है क्या? a में कितनी वैल्यू है? 12. सो कंडीशन ट्रू है. और b इक्वल्स टू 12, b में कितनी है? 20 वैल्यू है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई. So result is true. Why? Because here we are using OR operator. So equals to means इसमें चेक होता है कि A में जो वैल्यू है equals to means डॉट टू डॉट करेक्ट है क्या नहीं. equals to means as equals to value means A में जो वैल्यू है 12 वो as equals to ये इसमें जो वैल्यू इतनी है क्या? हाँ, कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है. और यहाँ पे और ऑपरेटर यूज हुआ है, लॉजिकल ऑपरेटर. अगर सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है तो भी ये एक ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा. यहाँ पे ए वाली कंडीशन ट्रू है. देन दिस इज नॉट ऑपरेटर्स. सो ये सिंबल नॉट का है, नॉट इक्वल्स टू. सी आउटपुट इज ट्रू इफ द वैल्यू इज फॉल्स. मीन्स अगर वैल्यू फॉल्स आती है तो ये आउटपुट ट्रू देता है, अगेंस्ट में काम करता है. सो यहाँ पे b इक्वल्स टू ट्रू, b इक्वल्स टू 0. कंडीशन क्या है? यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि b में कितनी वैल्यू है? 20 वैल्यू है. b इज नॉट इक्वल्स टू 0,
condition is true. So this is about the logical operator and or not. So see, this is the symbol and, or, this is or this is not. In and we can give more than one condition. If one condition means if the both condition is true, then it will return true. Then if any one condition is true, then it will return true. If, see, output is true if a value is false. So like this we can use and or not operator in Python. So plan to create computer program, how to create or write down a computer program. So see, this is the process, output, input, process. So see, output, the computer should display the questions with the options. Then input, the user has to enter an option as an answer. Then process, the computer will check whether the answer enter is correct or not. Means computer will check, the logic will check this is correct or not. And what type of output, means whenever you are trying to write down the program, you should take the input, the process should be happen, and result should be displayed. So this is plan to create computer program. So like this we can use Python programming language in our computer or laptop to develop web application, to develop software, or to solve mathematical operation. So thanks for watching my video. If you like the video, you can subscribe my channel. So please like and subscribe to my channel. इस चैनल पे हम आगे चल के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, तो इस चैनल को आप कृपया करके सब्सक्राइब करो, कंजूसी मत करो, बहुत सारा लाइक, फॉलो और शेयर करो. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो. टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.